So hello friends, I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from Tark Shastra. So guys, a big news have come from IIM Sirmaur. IIM Sirmaur, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने अपना अभी BMS प्रोग्राम लॉन्च करा है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. उस प्रोग्राम में दे हैव अपडेटेड द करिकुलम फॉर द प्रोग्राम. क्या क्या डिटेल्स है, क्या हाईलाइट्स है करिकुलम की, वी आर गोना वॉच दैट इन आवर वीडियो. सो प्लीज अंत तक बने रहिएगा एंड लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. लेट्स बिगिन. So if you go to IIM Sirmaur's website, you'll find that, of course, in the Bachelor's in Management Studies section, you'll find that there are 5 subsections to that. Now, still all the sections are yet to be updated, but they have updated the curriculum. So if you just click on that, we get onto a page. What is the highlight of the curriculum? So the course is 4-year course, right? It's a BMS honors course also. Yes. It follows national education policy, so you can leave the course in first year, second year, third year, and 4th year also. So for 4 years, the number of semesters are 8, which is 2 years per year. The hours per course is 45 hours, and you get 3 credit points for all the subjects. Now, if we go to the courses, the subjects that you'll be going through semester wise for the first and the second semester, which comprise of your first year, we'll see that you are going to go through basics of all the subjects, which include fundamental of mathematics, economics, communication, principle of management, understanding behavior. Now, this is a good combination where a lot of IIMs these days, or I would say that a lot of colleges these days are going with a combination of management plus liberal arts, right? Which is a good combination, which we also understand that being a manager, you need to have a good psychology about how does human behavior work, right? So they have included that. Understanding behavior is there, ethics and human values, and you'll see sports and yoga as a subject, which is again a very good thing for students. I always feel that sports and yoga must always be there for even a college kid. And sports and yoga is going to be continued through all the semesters. If you see, sports and yoga is all there in all the years. So yes, the first year comprise of all the basics, where you also going to study probability and statistics, and another good subject is data analytics. So if a student needs to understand, like they want to move towards data analytics, which is the future, they will get that also in BMS, right? Finance is another subject that you're going to go through. If we talk about the second year, which comprise of your semester 3rd and semester 4th, you'll get following subjects. What all subjects are there? So again, there are some subjects which are from liberal topics, liberal arts, which is psychology. You'll also read philosophy. Other than that, for the first year subjects, now you will move towards advanced section of that topics or the subjects. For instance, you'll move to economics 3, marketing 2, advanced data analytics, finance 2, etc., etc. Right? Some new subjects that you are gonna go through during your second year is critical thinking and problem solving. Now, again, this curriculum, whenever I'm going through this curriculum, I feel, काश मैं भी इस college में जाके पढूं, because the curriculum looks amazing. Right? Critical thinking and problem solving, this is one of the topic जो आप लोगों को एक critical thinking और problem solving वाला attitude देगा, जो कि managers के लिए बहुत important होता है. Trust me guys. Right? You'll also go through environmental science, again a very important subject, जहाँ अगर आप लोग CAT के aspirant कभी बनोगे, तो आजकल बहुत सारे IIMs जो है वो sustainable management course जो है वो लॉन्च करके कर रखा है उन लोगों ने. एंड इवन इफ यू सी अ लॉट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैव लॉन्च्ड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट कोर्स. सो अगेन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू रीड. एनवायरमेंटल साइंस, intellectual property rights. Now I am a lawyer, right? So I know the importance of intellectual property right, and trust me, it's a very good subject where you get to know about trademarks, copyrights, patent, etc., etc., GI. एंड दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जहां पर जैसे जैसे किसी कंट्री में या किसी जगह पर बिजनेसेस ग्रो करते हैं, वहां पर कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क का इंपॉर्टेंस उतना ही बढ़ जाता है. सो अगेन अ वेरी गुड सब्जेक्ट.
If we talk about the third year, again this comprise of semester 5th and semester 6th. क्या क्या रहेगा? सो थर्ड ईयर में एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में समझा था, देयर इज एन हाईलाइट, कि एक पूरा सेमेस्टर जो है दैट वुड बी डेडिकेटेड फॉर इंटर्नशिप, है ना, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के लिए. दैट इज गोना बी योर 6th सेमेस्टर. आपका जो 6th सेमेस्टर है उसमें आपकी जो 3 months का जो टर्म होगा दैट इज गोना बी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड वाइल आई टॉक अबाउट द 5th सेमेस्टर, कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स जो मुझे देखने को मिलते हैं वो है ऑफकोर्स हैप्पीनेस एंड वेलबींग, है ना. देयर इज पब्लिक पॉलिसी 2, कम्युनिकेशन, एंड ऑफकोर्स एक नया जो सब्जेक्ट है दैट इज टूरिज्म. नाउ इफ यू नो अबाउट IIM सिरमौर का एक MBA करिकुलम भी चलता है which is dedicated to tourism industry, right? So definitely you can expect कि IIM सिरमौर जो है वो लोग टूरिज्म में आपको जो गाइडेंस देंगे दैट वुड बी वंडरफुल. एंड यस, सो यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं जिसको. दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द बेस दैट विल बी क्रिएटेड फॉर यू फॉर द 4th ईयर, जो कि पूरा का पूरा रिसर्च पे बेस्ड होगा. So if you don't want to continue after 6th semester, you can take your BBA degree, BMS degree, and you can leave the college. But if you want to continue for the 4th year itself, you will get BMS honors. क्या है 4th year के curriculum में? So again, semester 7th and semester 8th comprise करेंगे. So you'll be given a chance to select subjects. 8 electives रहेंगे, 4 electives in each term, है ना. क्या electives रहेंगे वो अभी भी अपडेट होना बाकी है, but of course there will be electives. 7th semester में there would be 2 good subjects, which is gonna be movies and philosophy and Indian knowledge system. And semester 8th में there would be capstone project. capstone project क्या होता है? So basically capstone project जो है वो फॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर प्रोजेक्ट्स को, फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रिसर्च मैथोडोलॉजी यूज करके, उनको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है. बेसिकली दिस इज एन इनोवेटिव वे जहां पर बच्चे कुछ इनोवेटिव वेज यूज करते हैं, ग्रुप्स में रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पर, एंड देन दे डिवाइस अ कंप्लीट प्रोजेक्ट और गिव सॉल्यूशन ओवर दैट टॉपिक. ठीक है. सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड मेथड जो कि आपकी करिकुलम CV, है ना, करिकुलम बीटेक को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है. तो ये कंप्लीट करिकुलम है. ये जस्ट कल ही उन IIM सिरमौर की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है. वी हैव कम अप विद दिस करिकुलम फॉर यू पीपल, फास्टेस्ट ऑन YouTube. प्लीज गो थ्रू दिस करिकुलम. ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द करिकुलम्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली. If I were a student, I would have definitely gone for this curriculum. तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. That is gonna help us, motivate us to make such videos. Thank you so much guys. God bless you all.